जय मां शाला पिला माने मु सोमनाथ आपण मानक स्वागत करछे सारदा फिजिक्स को। तो पिला माने आ पूर्वर मु ऑलरेडी तम मानक इन्फॉर्म कर सारछे कि हमें मैथमेटिकल फिजिक्स 2 रो सब जगह क्लास हमें ए चैनल ले सारी नेचे। एबे हमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म रो क्लास भी चलछे और धीरे धीरे तार क्लास गुडा भी अपडेट हबो। सो पिला माने देखो तमरे एग्जाम भी पाखे आछे, सो तमे स्ट्रक्चर वे रे एग्जाम पे प्रिपरेशन करिबा गोटे सबुठ बड़ जिनस। आउ मु तो तुमको ठकिबार माने मोर चेष्टा नाही कि मु पिला मानकु ठके किंबा आगु को तमे प्रॉब्लम फेस कर। सो देखो तमे सिलेबस रो सब जिंस न पढ़ी थाई पार किंबा न पढ़, मु भी कहनी कि सब पढ़ आ जाई 90% आना सेटा समस्तंकर भी माने प्रायोरिटी न थाई। सो किंतु सिलेबस रो ईच एंड एवरी जिंस जेमते कि 8 मार्क के क्वेश्चन कोटा, 5 मार्क क्वेश्चन कोटा, 2 मार्क क्वेश्चन कोटा सेटा इन्फॉर्म कर दवा दायित्व होची मोर। ओके, सो आमे देखिबा पाठ पढिबा आ तापरे आमे क्वेश्चन उडा डिस्कशन करबा केमितिया क्वेश्चन आसे, को क्वेश्चन उडा 8 मार्क रो क्वेश्चन, को क्वेश्चन उडा को होची माने 5 मार्क रो क्वेश्चन, आ को गुडा को होची 2 मार्क रो क्वेश्चन। देखो तबे पिला माने एक्चुअली कहया गले तमे एनईपी रे पढुछ आ एनईपी रे 100 मार्क रो एग्जाम। सो माने दबा कथा सिलेक्शन दबा कथा माने जो सिलेक्टिव क्वेश्चन माने जो उडा भी बंटा जाए। सो सिलेक्टिव क्वेश्चन उडा के सीबीसीएस मॉड्यूल हे पड़थला, कारण सेथिरे माने गोटे यूनिट रू गोटे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तुम करिया पड़िबो। सो डिफरेंट यूनिट रू लॉन्ग क्वेश्चन थिबो। सो सेमति कर दबाटा सेटा बेटर, माने सेठी सिलेक्शन दबाटा बेटर, कारण गोटे छेडके आउटे पड़ दबो हे जिवो। किंतु जेहेतु तमे एनईपी रे अछ तो 8 मार्क रो क्वेश्चन भी जहां माने 5 मार्क दीटा मिसेले से माने 8 मार्क नो दउछंदी। सो तमे 8 मार्क पे प्रिपेयर हबा, 5 मार्क रो क्वेश्चन तमे जदी छाडी जिवो माने धने 8 मार्क रो धने दीटा तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन अछि गोटे यूनिट रे, तमे गोटे पढला आउटे छाड दला सेमतेले सेबडा तो 5 मार्क रे आस जाइतिबो ना। तो तमे केवल माने 8 मार्क रो क्वेश्चन लेखि के आसले किछ लाभ अछि कि? तापरे आमे प्रेडिक्ट भी केमति करबा कि कोटा आसीबो 8 मार्क रे कोटा आसीबो 5 मार्क रे, तो सेमिति किछ नै। सो हमको लॉन्ग क्वेश्चन सब जा पढिया पडिबो। नेक्स्ट रे हमर जो गुडी सब आरा वर्ष धन्य हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे जो गुडी सब पढि जाईची से गुडी सब क्वेश्चन आसीबार चांसेस ए ईयर बहुत कम अछि। सो से अनुसार हमें देखु आ ताको हमें क्वेश्चन प्रेडिक्शन करू। सो हमें माने मु एबे जदी तमन को पूरा फुल क्वेश्चन दे देबे माने जो प्रेडिक्शन क्वेश्चन दे देबे कि एउडा चांसेस अछि, सो से गुडा तमे सब पढि जिवो। नेक्स्ट रे आ जो गुडी रहइबो से गुडी को हबो ना तमे छाड़ देबो। सो छाड़ी देले असुविधा कोन ना, तमे एबे माने तमे सेकंड सेमिस्टर रे अछ, तमे जानना तमरो माने कैरियर कोउथिरे अछि, कोन अछि, केमति अछि किछि जानिनो। सो मे बी जदि केबे इन बाय चांस तुम फिजिक्स लाइन को आसीबे को चाहिलो किबा आसिलो ताले मोस्ट प्रॉब्लम हबो एथिरे, कारण ग्रेजुएशन रो फाउंडेशन ही तमे माने पीजी हुआ कि अलग जो भी सब एग्जाम अछि सेथिरे मोस्ट ऑफ द केसेस रे यूज हुए हला। आ नेक्स्ट रे तमे एई जो जहां भी सब थ्योरी पढुछ ताको जे तमे प्रॉब्लम रे एप्लीकेबल न कलो ताले शॉर्ट क्वेश्चन जोड़ी हो कि एंट्रेंस एग्जाम रे आसुची। आ नेक्स्ट रे जहां भी किछ भी माने अछि तमरो फिजिक्स ऊपर करबा पई सेठी हैरान हो माने जे तमे एबे भी बुझी पारथिबो। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन गोटे नॉर्मल जिंस तमे जदी प्लस 2 रे ताको स्किप करिवो माने एमति तमरो यूनिट वाइज क्वेश्चन अछि, सो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करिक ना तमे कर परिबो। यूनिट वाइज क्वेश्चन आसला भीतर तमे जो डिफरेंशियल इक्वेशन से स्किप करथिबो देन एटी फर्स्ट ईयर भी प्रॉब्लम फेस करबो, कारण आ केही पढेबेनी। नेक्स्ट रे तमे कोन ना ए जो सेकंड ईयर रे तमे जो ठीक भी जाओ आखी बुले देले डिफरेंशियल इक्वेशन बाहरिबो, मैथमेटिकल फिजिक्स आखी बुले देबो डिफरेंशियल इक्वेशन बाहरिबो। ओके, सो मोर उद्देश्य तम मानक ठकिबा नुहे। आउ मे बी वीडियोटा लॉन्ग हे पारे किंबा माने तुम क्वेश्चन उडा देखि कि ना बहुत लागि पारे, कि जेतिक भी मु दउची पूरा बाछि कि दउची, जेतिक भी प्रॉब्लम दउची पूरा बाछि कि दउची। आउ मोस्ट ऑफ द केसेस रे सब यूनिवर्सिटी एग्जाम रे ए सब क्वेश्चन ही पचारे। आ जब तुम इंटरनल देइथिबो तो तुम निजे भी जानि परथिबो। आ देखो आमे आज करबा कोन ना मैथमेटिकल फिजिक्स 2 रे यूनिट 1 फोरियर सीरीज करबा। ओके, सो फोरियर सीरीज जो अछि फोरियर सीरीज तमे के प्रॉब्लम करिवनी, तो से तो प्रॉब्लम जदी लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क न होगे तो 5 मार्क पके दिछवा ना, तो तमे जमा पूरा छाडी देई गले केमिति कोन पास करिवो। माने एटलीस्ट तो तमे 40 रु 50 मार्क रखिबो ना पास माने साइंस रे पास करबा होची 50 मार्क, 30 मार्क केबे नुह 40 रु 50 मार्क रखिबो। 50 मार्क रखिले तमर पुनी 25 काउंट हबो, माने 100 रु 50% जाउची, पुनी आउ जहा 50 रहला सब अलगा सब मिसी कि ना माने होउची, माने जेमति कि प्रैक्टिकल हो तमर जो अटेंडेंस हो सेतर सब मिसी कि मार्क आछी ना। सो से पे तमे जा बेल करिया पड़िबो। नेक्स्ट रे तो तुमको जे भी बहुत शॉर्ट फॉर्म रे देखौचंती किंबा एग्जाम ओरिएंटेड करचंती, मु तो कहबी से माने भूल करचंती आ जानि ही नाहंती। ओके,
सो सेट पय हमें आरंभ करबा क्वेश्चन ए जो सीरीज ता आरंभ करबा आ मो पर यूनिट 8 मार्किया 5 मार्किया मो डिफरेंशिएट करी कि ना कहि देबी कि एउडा सब 8 मार्किया ए होची 5 मार्किया आ ए सब आसे 2 मार्किया आ ताठो आगु को मोटो एक्सपेक्टेशन करिवो ही नाही आ मु केबे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन एमती के थंबनेल मु फास्ट री कहि दोची मो ए जो सारदा फिजिक्स अकाउंट रे केबे भी तमे पाइबोनी आ केबे भी तमो मिलबोनी ओके सो हमें आज क्वेश्चन डिस्कशन करबा फास्ट हमें स्टार्ट करबे मैथमेटिकल फिजिक्स 2 रे यूनिट 1 सो देखबा तार कोन सब अछि ओके तो पिला हमें स्टार्ट करबा कोन ने मैथमेटिकल फिजिक्स 2 यूनिट 1 मैथमेटिकल फिजिक्स 2 स्टार्ट कर कोन हमें यूनिट 1 ओके सो तमरो बेस्ट माने कोन कहलो तमरो एक्नॉलेजमेंट पाई मो एटा आउ थरे भी माने एटा तो नुह बाकी आगु को जोडा के अछि से सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन उडा मार्क कर लेबी प्रॉब्लम तो एता तो जा बेले प्रॉब्लम आसीबो आउ नेक्स्ट ईयर मु तो इंपोर्टेंस वाइज ही लिखबी एक नंबर कोन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज derive an expression for complex form of Fourier series अच्छा एटा पिला माने गोटे होची 6 मार्किया क्वेश्चन या सहित देखो एटा जे 6 मार्किया अछि या सहित एनी 2 मार्क क्वेश्चन आस पारे किंबा एटा जदी कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखो मु कहि दोची डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज केवल कॉम्प्लेक्स फॉर्म ता जदी फोरियर सीरीज कहितबा एंड तार कॉम्प्लेक्स जो अछि कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट भी बाहर करियो कहितबा तले सेटा होची केते मार्क रो क्वेश्चन ना 6 मार्क रो क्वेश्चन नेक्स्ट रे आ सहित कोन आस परिबो प्लस पार्सेवल आइडेंटिटी आइडेंटिटी 4 plus 4 8 4 plus 4 8 मार्क ओके 8 लिख दो जी 8 मार्क क्वेश्चंस 8 मार्क क्वेश्चन ओके नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन रहइबो ना राइट द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन write the Fourier expansion of a function and derive the Fourier coefficients ओके सो फोरियर एक्सपेंशन करबा फंक्शन रो आ डिराइव करबा कोन ना फोरियर कोएफिशिएंट आ एटा टोटल आसीबो 8 मार्क रो 8 मार्क ओके सो 5 सेकंड पिला माने ओके एटा वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन ये दीटा होची पिला माने कोन ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 नंबर कोन ना गोटे प्रॉब्लम कोन होची ना एक्सपांड इन ए फोरियर सीरीज expand in a Fourier series problem ता कोन कहूची ना f of x equal to minus pi to in between minus pi x is in between minus pi to 0 and the value of f of x equal to x in between 0 to x to pi in between 0 to x to pi ओके सो एटा भी पिला माने ये जते भी प्रॉब्लम मु जहां भी एठी सब लेखुची आको सब हम ऑलरेडी कवर करि नेछि क्लास गुडे करे तब सब देखो लिखि परिबो ओके सो देन 8 मार्क क्वेश्चन आउट कोन आछी ना आउट ए प्रॉब्लम आछी कोन सेटा ना
expand in a Fourier series in a Fourier series where for f of x equal to x square for value of x in between minus pi to pi. तापर हमें प्रूफ करबा कोन एक नंबर प्रूफ करबा summation over n equal to 1 to infinity 1 by n square equal to pi by 6. Then second number is summation over n equal to 1 to infinity minus 1 whole to the power n minus 1 upon 1 by into 1 by n square equal to pi square upon में 12 एटा भी पिला माने 8 मार्क क्वेश्चन 8 मार्क रो क्वेश्चन ओके सो ये चारटा रहला 8 मार्क रो क्वेश्चन नेक्स्ट ना गोटे ही रहइबो 8 मार्क रो क्वेश्चन कोन कोची सेटा अरे अरे छाड़ इंपोर्टेंट तो मान ली सो पिला माने देखो एई वर्ष पाए जो मानकर आर वर्ष पड़ी जाईची फोरियर सीरीज पड़ी जाईची थियोरेटिकल क्वेश्चन भीतर इंपोर्टेंट रहउची कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज प्लस पार्शियल आइडेंटिटी नेक्स्ट रहउची कोन ना प्रॉब्लम आर वर्ष जो भी पिला मानकर जो यूनिवर्सिटी रे फोरियर सीरीज रो कोएफिशिएंट डिफाइन करिया पे पड़ी जाईची सेमानक पई एई वर्ष इंपोर्टेंट होउची कोन ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज आउ पार्शियल आइडेंटिटी दीटा तो मिसी कि 8 मार्क रो नेक्स्ट जेति कि मु 8 मार्क के प्रॉब्लम कहली आउ गोटे 8 मार्क रो प्रॉब्लम होइला सेटा होच कोन ना गिवन दैट 5 नंबर गिवन दैट f of x equal to x for 0 to pi and f of x equal to minus x for minus pi to pi এটা 0 to minus pi into 0 to minus pi ये सब डिटेल नहीं माने क्लास अवेलेबल अछि जे तुम देख परिबो किछ असुविधा नहीं नेक्स्ट एक्सपांड छाड़ा लिख दबा एक्सपांड f of x into the Fourier series into the Fourier series and prove that proof करिवो कोन पिला माने ना summation over n equal to 1 to infinity 1 by 2n minus 1 का whole square equal to pi square upon में 8 एटा होछ पिला माने केटा मार्क रो क्वेश्चन 8 मार्क ओके सो ये थिला पिला माने कोन ना ये थिला 8 मार्किया जते भी क्वेश्चन थिला ये थिला 8 मार्किया क्वेश्चन नेक्स्ट हम डिस्कस करिया कोन ना 5 मार्किया क्वेश्चन सो कहूचे 5 मार्किया क्वेश्चन कोन सो आस करिवो जेमति कि हमर इवन ऑड फंक्शन रहिला साइन फंक्शन रहिला कोसाइन फंक्शन रहिला सेउडा आसीबो 5 मार्किया जेबे जेबे सिलेक्शन माने बसी की जीव किबा देखि की जीव किबा पढी की जीव जीवन में एते हैरान होय केबे विश्वास भी कर परिबो ओके 5 मार्क क्वेश्चंस एक नंबर कोन ना एक्सपांड द फंक्शन विथ आर्बिट्ररी पीरियड expand the function जोडा हम करिथिली आर्बिट्ररी पीरियड -l to l with arbitrary period -l to +l okay then second question कोन होइबो ना कोसाइन सीरीज और फोरियर एक्सपेंशन माने आर अलग ना कोन ना फोरियर
expansion of a even function then 3 नंबर कौन आसबो ना sin series और Fourier अच्छा एटा भी 5 मार्क एटा भी 5 मार्क रो Fourier expansion of a odd function सेटा भी 5 मार्क then 4 नंबर क्वेश्चन कौन ना फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द Fourier सीरीज ओके 4 नंबर टा हम एटा लिख दबा ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ sin प्लस cosine फंक्शन बीटा का 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 5 मार्क क्वेश्चन देन 5 नंबर रे गोटे प्रॉब्लम कोन ना फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द Fourier सीरीज देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द Fourier सीरीज जदि लॉन्ग क्वेश्चन ना पड़िला ताले शॉर्ट नोट रे थिवो माने 5 मार्क के लिखिवो फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द Fourier सीरीज of f of x equal to x on the interval of minus pi to pi ओके एटा वाला गोटे प्रॉब्लम देन 6 नंबर प्रॉब्लम कोन कहूची द सेम जिंस फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ Fourier सीरीज complex form of Fourier series of f of x equal to e to the power x on the interval of minus pi to pi and f of x plus 2 pi prove f of x plus 2 pi equal to f of x okay then 6 number question गला कितने जे आछे ठीक अछि 7 number question 7 8 9 टोटल 7 number question कौन कहूची ना expand f of x equal to x in Fourier series in the interval of minus pi to plus pi then 8 number कौन कहूची ना expand f of x equal to x square in Fourier series in the interval minus pi plus pi ओके ये सब होची 5 मार्क एटा होची 5 मार्क एटा होची 5 मार्क एटा भी 5 मार्क एटा भी 5 ओके सो या भीतर मु पिला माने तुमको इंपोर्टेंट कहि दोची इंपोर्टेंट कोन अछि देखो बुझाई दोची आर एटा तो ऑलरेडी इंपोर्टेंट अछि वेरी इंपोर्टेंट देन ए जो दीटा अछि वेरी इंपोर्टेंट एटा भी वेरी इंपोर्टेंट अछि आर वर्ष जदी जहार एटा इंपोर्टेंट अछि आर वर्ष जहार कॉम्प्लेक्स फॉर्म पड़ी जाइतो से मानकर एथरो शॉर्ट नोट रे जहा बेले प्रॉब्लम थिबो ओके सो ये तो अच्छे देन
এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা भी ভেরি ইম্পর্টেন্ট। प्रोब्लेम गुडा किछि नै पिला माने प्रोब्लेम गुडा गोटे दीटा माने मु तो जो सीरीज करे जे प्रोब्लेम गुडा तमे गोटे दीटा बुझि जिबा आराम से सब जगह करला। ओके सो ये दीटा भी आसी पारे, ये दीटा भी आसी पारे, किंतु ये सब जगह अधिक टिके इंपोर्टेंट अछंती अपेक्षा एटा केवल इंपोर्टेंट अछि, ये सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा मु कहि दोछि आदर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोटा आसीबो ना ये आसीबो, ये दीटा भीतर गोटे प्रॉब्लम आसतो कि ए टाइप रो प्रॉब्लम आसतो पॉलिसी। ओके सो पिला माने एटा थिला कोन ना एटा थिला हमर 5 मार्किया क्वेश्चन, 5 मार्किया क्वेश्चन सब सरी हला ना आ गोटे रहि जाई कि ओके 5 मार्किया आ गोटे रहि जाई, गोटे प्रॉब्लम त अछि जोटा कि मोस्ट ऑफ दी आसे आ वेरी इंपोर्टेंट भी अछि। मे बी ये 5 मार्किया गोटे 2 मार्किया गोटे मिसेक ना पके दिबे 8 मार्किया रे किछि बड़ कथा नुह। आ फोरियर सीरीज जो प्रोबेनियस मेथड जो प्रॉब्लम गोटे दीटा भी सॉल्व करथिबो ना आराम से तुम कर परबो आ आराम से पास कर परबो। मो कहे कथा अच्छा मो एटा लास्ट को कह देबी पास करिया पे कोन कोन दरकार। गोटे काम करिया पास करबा पे हमें गोटे शॉर्ट्स पकई दवा। ओके सो एबे 5 मार्क के आ गोटे करिक ना हमें 2 मार्क के मूव कर दिबा। फाइव मार्क रा गोटे क्वेश्चन रहला 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कोन बोली ना एक्सपांड इन ए फोरियर सीरीज। एक्सपांड इन ए फोरियर सीरीज f of x equal to minus pi in between okay sorry minus I लिख देछि f of x equal to minus 1 in between minus pi to 0 then equal to plus 1 in between 0 to plus pi। एटा होय पिला माने केतना मार्क क्वेश्चन ना 5 मार्क क्वेश्चन। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट माने एटा के बहुत चांसेस अछि ना। ओके नेक्स्ट हमें जिबा कोठी ना 2 मार्क क्वेश्चंस एटा लेवल होची। रोड बेसी लिखा है आगे डायरेक्ट 2 मार्क क्वेश्चंस कोन कोची एक नंबर इवन फंक्शन कोन ऑड फंक्शन कोन देखो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इवन फंक्शन और इवन फंक्शन जेटा अलग है जिंस 2 मार्क अच्छा देखिए केमिकल लिखा होची ओय ये कोन ठीक है चलो से छाड़ 2 मार्क एक नंबर क्वेश्चन कोन ना इवन फंक्शन सेकंड क्वेश्चन ऑड फंक्शन थर्ड क्वेश्चन देखो जेतेटा प्रॉपर्टी अछि इवन आ ऑड फंक्शन ता दरो मन इच्छा गोटाय दीटा पकै दे परिबो 2 मार्क के। ओके प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ओके सो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन रे जते प्रॉपर्टी अछि ताको पुट करथिबा माने मु तो इथरे ऑलरेडी लिखि छि किनु मत लागुनी ए तो सब लिखिया पे कारण तुम देखि न तुम हार्ड पे लिखबो जहां भी किछ अछि इवन और ऑड फंक्शन गोटे दीटा मते वीडियो जाई छि क्लास रे जो माने हमरो सीरीज रे सो जाई तुम देख परिबो। ओके सो नेक्स्ट अच्छा मु धीरे से तुम देखे दो चाहूँ 4 नंबर क्वेश्चन कोन ना इफ f of x is an even function of x then prove एटा इंपोर्टेंट अछि then prove
integration from minus pi to pi f of x dx equal to 2 of integration 0 to pi of f of x dx. Okay, then now the one question, the first number, now if g of x is an odd function of x, the integration from minus pi to pi g of x dx equal to 0. Then 6 number question kono na half range cosine series, half range cosine series, और 7 number half range sine series, sine series. और रहला कोन ना 8 नंबर डिरिचलेट कंडीशन, डिरिचलेट को बा डिरिचलेट को जहा कोचो को डिरिचलेट कंडीशंस, ये सब होची 2 मार्क, 2 मार्क, ओके 2 मार्क, 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 ओके. सो आंसर ये very important होची एटा नेक्स्ट एटा ए तीनटा को देन आउ ए दिटा, ये तीनटा जाक होचंती एतिक होचंती very देखो आर बोधे 7टा खंड अछि 7 प्रॉपर्टी, तुम केटा प्रॉपर्टी तो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक अछि प्रॉपर्टी, properties of this. Okay, so आज जो 7टा प्रॉपर्टी अछि 7टा जाक करबो जोटा कि 2 मार्किया आउ दैट्स ऑल. आ मु लास्ट को पूर्ण थरे कहि दउ चाहूची कि जो भी पिला माने अछ आउ जो माने सब शॉर्ट क्वेश्चन पाई आ सीरियस अछ, देखो ग्रुप रे मो हिसाब रे 10टा सीरियस छुआ 50टा अनसीरियस छुआ को अपेक्षा भलो. सो जो माने भी तुम भाबुछो शॉर्ट क्वेश्चन तुमको दरकार अछि तो से माने हम व्हाट्सएप कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर पारो, जो थे हमें माने डाउट डिस्कशन आ अलग सब जिंस हमें से डिस्कस करू माने फिजिक्स रिलेटेड. सो एटा थिला आज क्लास, रहली जय जगन्नाथ, जय मां शारदा.